Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah, increase us in knowledge. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be enjoying good health. Okay, grade 4. Today we are going to learn unit number 6, lesson number 3. What you have to do that I'm going to do the reading of science fiction diary, and you have to read after me. अपनी books open करें, page number 30. Okay, अब आपने इसको मेरे साथ साथ जो है वो read out करना है पहले. Carefully you have to listen it, और उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी activity करेंगे, book activity, dictation words करेंगे, और आपकी vocabulary and comprehension. ठीक है? So first of all, just listen and read it after me. Fine? So let's start. Where have the aliens landed? You can see the pictures of aliens on the screen. या अपनी book पे आप देख सकते हैं. So let's see कि वो कहाँ land कर रहे हैं. Look, there's a planet Earth, and those are Earthlings. Look, they are waving at us. We have landed. Let's go out and have a look. Put on your Earth suits first. Don't forget to write your diaries. जी, अब इन पिक्स से और उनकी डिस्क्रिप्शन से क्या आपके माइंड में आया? एलियंस ने कहाँ लैंड किया है? ऑफ कोर्स अर्थ पे लैंड किया है, एंड दे आर डिसाइडिंग टू राइट द डायरीज. ठीक है, कि हम अर्थ पे जाके अपनी डायरी लिखेंगे. सो लेट्स सी व्हाट दे आर राइटिंग इन देयर डायरीज. ठीक है, आ जाए. ये आपके पेज नंबर 30 पे ही है, विजिट टू प्लैनेट अर्थ. जी, ट्यूसडेज डायरी. ट्यूसडे की डायरी है. टुडे वाज माय फर्स्ट डे ऑन प्लैनेट अर्थ. It is a strange place. I was walking along the river when a large green and yellow worm came out of a hole in the hillside. It was traveling very fast. It made a noise at me as it went by. I followed it in my spaceship. It came to a feeding station where a lot of people were waiting. It slowed down and stopped. Then it ate all the people. जी, this was Tuesday's diary. ठीक है, जिसमें aliens ने ट्रेन को एक worm समझा हुआ है. Okay? Yes, next is the Wednesday's diary. Wednesday. As I was walking past a house, a woman was hanging clothes on a line outside her house. I think she was hoping to sell them. Many people sell clothes in this way because you see many houses with clothes outside. Thursday. Today I found an earth school for children. While I was walking past the school, lessons were finishing. The students were coming into the playground. One boy was putting on his air heaters. That was surprising because it was quite hot. But I think he was unwell, as his body was also shaking. Ji, next is your Friday's diary. Okay. In the evening, I went for a walk around the town. A man was standing outside his little purple house. First, he filled a bucket with water. Then he took out a big cloth. I watched him while he was washing his house and singing. He washed the doors, the windows, and the roof. I felt sorry for him because he was a big man and only had a small house. Saturday. Today I went to the seaside.
People were walking along a broad street beside the sea, eating different kind of food. I also saw some small spaceships flying around in the air. While one man was eating, one spaceship flew down very fast and took his sandwich. Sunday. Today is a rest day for Earthlings. I saw many people staring at an important box in their homes. The box was making sounds and showing pictures. Some people were laughing at the box. One boy was staring at it lying down. Yes, students, this was all about reading. I hope you will read it after me. Now here comes our book activity. This is on page number 31. Translate alien English into English. Okay. So the first one has been done. A bomb. This is in alien English. Lekin English में क्या है actually? This was a train. Okay. So next is a feeding station. A feeding station को आपने match करना है a train station से. नेक्स्ट इज सेल क्लोथ्स सेल क्लोथ्स को आपने मैच करना है ड्राई देयर क्लोथ्स एयर हीटर्स को मैच करें एयरफोन्स के साथ अ स्मॉल हाउस जी अ स्मॉल हाउस कौन सा है आपने पढ़ा है फ्राइडे की डायरी में जहाँ पे वन मैन इज वॉशिंग हिज कार जिसको वो एक छोटा सा घर समझ रहा है ठीक है एलियन सो अ स्मॉल हाउस विल बी मैच्ड विद अ कार Broad Street will be matched with beach. Important box. इसको मैच करें आप टीवी के साथ एंड शेकिंग बॉडी डांसिंग के साथ ठीक है शेकिंग बॉडी को मैच करेंगे डांसिंग के साथ जो आपने थर्सडे की डायरी में पढ़ा है जहाँ पे एलियन जो सा है वो स्कूल में विजिट कर रहा है और एक्चुअली द बॉय इज लिसनिंग टू म्यूजिक और वो उससे डांस कर रहा है जिसको एलियन समझ रहा है कि ही इज सिक और वो शेक कर रहा है अपनी बॉडी को ठीक है ओके स्टूडेंट्स these are some dictation words इनको अच्छी तरह से पढ़ना है then you have to do these words on your copy so the first word is earth then fading station slowed unwell noise slow waiting एंड सरप्राइजिंग ओके ये वर्ड्स ना सिर्फ लिखने हैं बल्कि इनको स्पेलिंग समेत लर्न भी करना है ओके हियर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर मीनिंग ओके सो द फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंज एडजेक्टिव है ये मीनिंग इज अननोन जिसको आप जानते नहीं अजनबी भी जिसे हम कहते हैं ठीक है द सेकंड वर्ड इज अनवेल दिस इज आल्सो एन एडजेक्टिव sick and ill. Next word is hillside, adjective, area of mountains. Second last word is surprised. This is also an adjective. Its meaning is astonished, हैरान होना, ठीक है? Last word is important. This is again an adjective and the meanings are of great value. Okay, here comes one word for a sentence, or we can say it one word substitution. Two pieces of bread with other food between. Yes, you say it a sandwich. The place where people play games is called a playground. Okay students, here are some words and we have to make the sentences. ये sentences कुछ आपके लिए बने हुए हैं लेकिन बहुत better है कि आप सिर्फ idea यहाँ से लें लेकिन sentences अपने बनाएं. Okay? So the first word is strange. There was something strange about her eyes.
The second word is unwell. I'm feeling unwell today. Unwell mean not well, जब आप ठीक नहीं होते, ठीक है? So the third word is hillside. I went for a walk with family on hillside. Next word is surprise. I was surprised to saw a fairy in my room. The last word is important. Education is important for us than other matters. जी स्टूडेंट्स, ये वो सेंटेंसेस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन आपने इनके सेंटेंसेस कोशिश करें कि खुद से बनाएं. ओके, सो हियर कम्स कॉम्प्रिहेंशन. What you have to do, that read out the questions, then listen to the answers and write them on your copy. Okay, where were the people waiting for the train? कुछ याद पड़ा आपको कि लोग कहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे थे? ट्यूसडे की डायरी में ये लिखा हुआ है, ठीक है? People were waiting for the train on a train station. So question number 2 is, why was the woman putting clothes on the line? जी, ये आपकी वेंसडे की डायरी में है. अगर आप इसको गौर से पढ़ें, द वुमेन वाज पुटिंग क्लोथ्स ऑन द लाइन फॉर गेटिंग देम ड्राई. ठीक है, जो कि एलियन समझ रहे थे ना कि वो उनको सेल आउट करने के लिए लटका रहे हैं, तो इट वाज नॉट दैट, वो उसको ड्राई करने के लिए लटका रही थी. द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द बेबी डूइंग व्हेन ही वाज शेकिंग अबाउट? जी, ये आपकी थर्सडे की डायरी में है, जब एलियन स्कूल को विजिट कर रहे हैं. सो द बॉय वाज शेकिंग बिकॉज ही वाज एंजॉयिंग म्यूजिक. ठीक है. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द राइटर फील सॉरी फॉर द मैन आउटसाइड हिज हाउस? जी, ये आपकी फ्राइडे की डायरी में है, जब आपका जो एलियन राइटर है वो सॉरी फील कर रहा है ना? द राइटर फेल्ट सॉरी फॉर द मैन बिकॉज ही थॉट दैट हाउस वाज स्मॉल एंड मैन वाज बिग. वो उस कार को ही उसका घर समझ रहा था ना, और सोच रहा था कि हाउस जो सा दैट इज स्मॉल एंड द मैन इज टू बिग फॉर दैट. यस, द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड वन ऑफ द स्पेसशिप टेक? So the answer is, one of the spaceship took a sandwich from a boy. ये आपकी सैटरडे की डायरी में है. Okay. So I hope students the lecture is clear to you. आपने अपनी टेक्स्ट की कॉपी पे पहले अपने अच्छे से रीडिंग को करना है. टेक्स्ट की कॉपी पे डिक्टेशन वर्ड्स, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस मेकिंग और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस अच्छी तरह से करने हैं. डे और डेट लिखना अपनी कॉपीज के ऊपर मत भूलें, और टेक्स्ट की कॉपीज जो सी हैं वो 16 को सैटरडे को सबमिट आप करवा दें. ओके, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.